अल्लामा इकबाल की डॉक्ट्रिन में एक बहुत अमेजिंग डॉक्ट्रिन हमें मिलती है, द डॉक्ट्रिन ऑफ खुदी। खुदी को कर बुलंद इतना कि जहां वो बात करते हैं, जहां वो खुदी के तर्जुमा खुदा के राजदार होने की बात करते हैं, जहां वो ये कहते हैं कि खुदी का सिर्र नहा, द सीक्रेट ऑफ खुदी लाइज इन ला इलाहा इल्लल्लाह। व्हाट इज दिस डॉक्ट्रिन ऑफ खुदी? देखिए एक बात हम बच्चों बड़े साफ आपको बता रहे हैं, यू विल नॉट अचीव ऑनर, you will not achieve glory, you will not achieve what you want to achieve for this country without understanding, applying, implementing and leading with khudi. And khudi is the concept of self-respect and dignity and honor. Khudi is your spiritual dimension. Khudi is that connects you with Allah subhanahu wa ta'ala and give you the courage and the honor that you stand up against the greatest of tyrants. You stay hungry. You face the greatest of threats, but you do not compromise on the honor and dignity of your country, your faith, your prophet, and your people. That is khudi. इकबाल ने कोई तलवार और ताकत और तीरों और फौजों की मदद से तो तब्दीली नहीं लाई थी. The way he ignited the generation was to make them understand, do not compromise on your self-respect and honor. इसकी मिसाल हम आपको देते हैं, जो कायद आज़म को देखिए, all you need is self-respect, ability and power and confidence to stand up for it. कायद आज़म उसी अंग्रेजी निजाम के पढ़े हुए थे, अंग्रेज बैरिस्टर थे, सारी जिंदगी अंग्रेजी तर्क की जिंदगी गुजारी, 1931 तक घबरा के फिक्र परेशान होकर इंडिया छोड़ के चले गए. कायद आज़म के पीछे पीछे अल्लामा इकबाल गए, उन्हें कन्विंस किया कि वापस आओ, तुमने मुसलमानों को लीड करना. It's your destiny to lead the Muslim. He said, I don't have a nation. He said, I'll give you a nation. He said, we don't have an ideology. I said, I've given an ideology. I said, I don't have a goal to fight and die for. I said, I'll give you Pakistan as a goal and fight and die for. He brought him back. And then he infused, he turned, transformed Muhammad Ali Jinnah into Qaid Azam. And then what he became. जब कायद आज़म गवर्नर जनरल थे, तो ब्रिटिश एम्बेसडर उनके पास आता है और कायद आज़म से कहता है कि द किंग्स ब्रदर इज कमिंग टू कराची. ब्रिटिश किंग का भाई कराची आ रहा है, अगर गवर्नर जनरल उसको रिसीव करें तो ये पाकिस्तान की बड़ी इज्जत होगी. कायद आज़म का जवाब सुनिए. कायद आज़म कहते हैं, आई हैव नो प्रॉब्लम इन रिसीविंग द ब्रदर ऑफ द किंग, ओनली अंडर वन कंडीशन, when my brother goes to UK, the king will receive him there. But all it takes is courage and honor and dignity and self-respect. I'll not sell myself off. ए तायर लाहौती उस रिस्क से मौत अच्छी, जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोताही. हमारे हुक्मरान हमको ये समझा समझा के मर रहे हैं प्रैक्टिकली कि अगर कैरी रूगल बिल अप्रूव नहीं किया तो हम भूखे मर जाएंगे. बेशरम लोग. When nations sell their honor and dignity, there's nothing left. You may live in the most fascinating houses, you may live most comfortable life. Middle East में देख लीजिए आप, they are the richest people on earth, but they're not feared, they're not respected by the enemies. हमारे तमाम तर प्रॉब्लम्स के बावजूद, हमारे तमाम तर बिजली पानी गैस के बहरान और आटे की लाइनों के बावजूद, हमारी तमाम गुर्बत के बावजूद, our enemies are most fearful of Pakistan. Why? Because it knows generation, the people live here, they know the word of dignity, they know how to protect their honor and khudi, and that is the reason. आपको सबसे पहले अपनी खुदी को, अपनी आइडियोलॉजी को रिवाइव करना, इकबाल को रिवाइव करना. इकबाल इज मैजिकल. अगर हमारे मीडिया से, हमारे एजुकेशन सिस्टम से इकबाल को गायब कर दिया गया, एंड दैट्स, और उसको दूसरा तरीका इकबाल को गायब करने का ये है कि बच्चों से हमारी उर्दू जबान छीन ली है. हमारे बच्चे उर्दू बोलते तो हैं, पढ़ते और समझते नहीं है प्रैक्टिस में. और जब उर्दू मुश्किल लगने लगी तो खुद ब खुद इकबाल अलग हो गया. सो दिस इज वेयर वी नीड टू रिवाइव आवर आइडियोलॉजी एंड आइडेंटिटी. अपने बच्चों को उर्दू पढ़ाएं. बच्चों, इट्स मस्ट ऑन यू टू लर्न. तुम सारी दुनिया की आला तरीन तालीम हासिल कर लो, अगर उर्दू ना पढ़ सके. हमारे बड़े अरबी भी बोलते थे, फारसी बोलते थे, उर्दू बोलते थे. एक जनरेशन गुजरी, अरबी गई, सिर्फ फारसी और
उर्दू रह गई, वो जनरेशन गई, फारसी भी गई, और अब ये जनरेशन आई है तो प्रैक्टिकली इसकी उर्दू भी जा रही है। हमको जेलसली अपनी उर्दू को, अपने इकबाल को रिवाइव करना है, प्रोटेक्ट करना है, सीने से लगाना है। अल्लाह के फजल से ये मैसेज फैल रहा है। ये बात सिर्फ ये नहीं है कि कहने की बात है, अल्लाह के फजल से ये टी शर्ट हम पहने हुए, यू कैन सी दिस ऑल, इट्स अ ब्रांड, पाकिस्तान एक इश्क, एक जुनून जो आपके पीछे लगा हुआ है। अली इज वेयरिंग द सेम टी शर्ट, मेनी चिल्ड्रन हैव वेयरिंग द सेम टी शर्ट्स है। One of the finest, topmost fashion designers of this country got together on this ideology and they said, we want to contribute our share. हम सिर्फ बातें नहीं करना चाहते, हम कुछ करना चाहते हैं। They got together. May I invite them as a role model for the youth, for somebody who can bring about a major change. Between us is present Maria B, mashallah, who started this line. She's present. Maria, I would request you to come up, please. Mashallah, these are the role models. Ali, Azmat, look at him. He comes from a different culture. Maria, mashallah, she's created a culture altogether. The top 10 fashion designers of this country are now contributing their share to create this culture. Mashallah, this mission is penetrating in the armed forces, penetrating in youth, penetrating in business communities and doctors. Pakistan के पूरे doctors हमारे पास आए, representative organizations. How can we contribute to Pakistan education? Just do your bit and you'll see the magic. Iqbal was just one man, and see the magic he created. The power of Iqbal's ideology lives on. Be part of it. Inshallah, you'll see khair and barakah coming out. I just want him to give his message for the Assalamu alaikum. My name is Tariq and my only claim to fame is that I am a teacher. I teach many of these youngsters present here. Camera to camera. Thank you very much for a very illuminating lecture, Mr. Zaid Hamid. TV news में My question to you, sir, is Sir, why don't you ask the question? Can you speak? Yes, please do. Sir, we keep hearing about these conspiracy theories that India is responsible. The Americans are responsible. The Jews are responsible. And we've heard these conspiracy theories. At least I've heard these conspiracy theories throughout my life. I was present in those dark and dismal days in East Pakistan, and when we always heard that India is responsible, the Bengali Muslims are not doing this. But I was there, sir. I know India was not responsible. It was an indigenous, homegrown Bengali nationalism that was creating that mayhem in East Pakistan. I see the repeat of the same thing here also. Now, people like Jaish Muhammad, Tehreek-e-Intifada Sharif-e-Muhammadi, and all these organizations are Pakistani. They are Pakistani Muslims, and they have their own agenda. I cannot deny that they might be getting funding from abroad somewhere, but they have an ideology, they have an agenda, and they are trying to impose their own obscurantist type of political, social agenda on all of us here in Pakistan. But would you like to comment on that? Are they not Pakistanis? And some of these organizations, I'd like to say something more, like the Tehreek-e-Intifada Sharif-e-Muhammadi and others, were created much before the Americans came to Afghanistan. The Tehreek-e-Intifada Sharif-e-Muhammadi, the Jaish-e-Mohammed, and many other Muslim organizations were created much before 9/11, much before America came to Afghanistan. Let me clarify certain things here, children. Let's take the East Pakistan first. There is absolutely no doubt in this. There is absolutely no contradiction in the fact that almost 500,000 Indian army invaded East Pakistan and took it away from us. Indians invaded East Pakistan. What right did they have to invade? Even if there was an indigenous local disturbance, that was an internal problem of Pakistan. Who gave the right to Indians to cross the international borders? इसका मतलब है कि इंडिया में जो 140 सेपरेटिस्ट और रेजिस्टेंस मूवमेंट्स काम कर रही है, खालिस्तान की कर रही है, कश्मीर की कर रही है, तमिलनाडु, नक्सलाइट्स, माओइस्ट, नॉर्थ ईस्ट, 7 सिस्टर स्टेट,